Namaskar. Welcome to this third and concluding session of pension and retirement benefits. In the earlier session, I have covered many topics like pension, types of pension, calculating qualifying service, commutation of pension, gratuity, and other topics. Here, I will start with leave encashment, dearness relief, family pension, and some special cases we will be discussing here. So, लीव इनकैशमेंट समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि किस तरह के लीव का इनकैशमेंट होता है। लीव रूल में लीव टोटल डील होता है और अकॉर्डिंग टू लीव रूल देयर आर टू काइंड्स ऑफ लीव। एक है जहां लीव एक्यूमुलेशन होता है, जहां पे लीव को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ईयर एंड में वो लीव लैप्स नहीं करता है। और दूसरी जगह है जहां पर कि वो लीव जो है ईयर एंड में लैप्स कर जाता है। तो दो तरह के लीव हुए। पहली कैटेगरी में ईएल क्वालिफाई करता है और हाफ पे लीव क्वालिफाई करता है। दूसरी कैटेगरी में सीएल क्वालिफाई करता है और ऑल अदर लीव्स क्वालिफाई करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पहली कैटेगरी का लीव है उसी का इनकैशमेंट होता है। तो इनकैशमेंट इज ऑलवेज फॉर हाफ पे लीव एंड ईएल। इसके अलावा किसी और लीव का इनकैशमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये ईएल एंड हाफ पे लीव इन्हीं का इसका इनकैशमेंट होगा। एंड मैक्सिमम इनकैशमेंट जो होता है 300 डेज का। सो दैट इज अ लिमिट। Total leave that can be accumulated whether from EL or from half pay leave, this total will be 300 days. But EL is encashed at the rate of leave salary, which is basic pay plus DA, and half pay at the rate of half of leave salary, that is half of basic plus DA. So because this encashment is higher than this, first priority is given to this. So if you have more than 300 days or equal to 300 days, that will be encashed. If the remaining days, if you do not have 300 days, then the shortfall is filled from half pay leave, and that is encashed at the rate of half pay leave rate. So that is the total secret of leave encashment. हम इसी को डिटेल में देखने वाले हैं। केवल यहां इतना समझें कि ईएल एंड हाफ पे लीव, जितना ईएल होगा उसको पूरा कंसीडर कर लेंगे और शॉर्टफॉल को 300 में से शॉर्टफॉल को हाफ पे लीव से लेंगे, दोनों को मिला देंगे। कहने का मतलब है कि जो भी हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ डेज फॉर ईएल और नंबर ऑफ डेज फॉर हाफ पे लीव, दिस शुड बी इक्वल टू और लेस देन 300 से ज्यादा नहीं। इससे किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं की जाती है। जैसे कि ग्रेट्युटी से 10% हम डिडक्ट कर लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, और बाद में हम देंगे जब लाइसेंस फी वगैरह क्लियर हो जाएगा। इससे इस तरह का कोई डिडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर आपकी सर्विस एक्सटेंड हुई है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वो एक्सटेंडेड पीरियड में भी जो लीव आप अर्न करेंगे वो आपको दिया जाएगा लीव इनकैशमेंट के रूप में, प्रोवाइडेड 300 डेज आपने पहले इनकैशमेंट ना लिया हो। डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर आपके खिलाफ चल रही है तो हाँ, लीव इनकैशमेंट को विदहेल्ड किया जा सकता है डिसीजन आने तक। अगर री एम्प्लॉयमेंट आपका होता है और पहले ऑर्गेनाइजेशन से आपने लीव सैलरी ले लिया है, इन दैट केस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ 300 डेज दैट यू कैन क्लेम फ्रॉम योर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर री एम्प्लॉयड। On resignation, this 300 days limit reduces to 150 days with the condition that there will be no encashment from half pay leave. If it is voluntary retirement, the calculation is exactly at par with regular retirement. Agar it is compulsory retirement, then what will happen? Or if it is premature retirement, that is the case of punishment, then what will happen? In both the cases,
प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब हो गया कि अगर रिमूवल हो रहा है या डिसमिसल हो रहा है। मैंने इन सारी चीजों को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अपने सेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं उस पर। कंपल्सरी रिटायरमेंट या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दोनों के केस में जैसा ऑर्डर में लिखा रहेगा उस तरह से लिव इनकैशमेंट होगा। कितने दिन का लिव इनकैशमेंट करना है, दैट विल बी मेंशन्ड इन ऑर्डर। यदि कोई पर्सन लीव पे है और लीव के दौरान ही उसका डेथ हो जाता है एंड ड्यूरिंग द लीव उसका डेट ऑफ इंक्रीमेंट सैलरी का फॉल कर रहा है, तो इन नॉर्मल केस व्हाट हैपेंस, इफ यू आर ऑन लीव, नो इंक्रीमेंट ऑन सैलरी इज प्रोवाइडेड टिल यू आर ऑन लीव। जब आप लीव के बाद आते हैं तो वो आपको इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, लेकिन यहां तो वो लीव के बाद आ ही नहीं रहा है। सो वेदर वो इंक्रीमेंट उसको फॉरगो करना पड़ेगा तो नहीं, यहां वो इंक्रीमेंट उसको ड्यूरिंग द लीव दिया जाता है एंड his last emolument will be calculated for the purpose of calculation of leave and for all purpose, even for pension and gratuity also। वो लास्ट इंक्रीमेंट जो दिया जाता है उसके बाद जो कैलकुलेशन आता है लीव का, और उस इंक्रीमेंट के दिए बगैर जो कैलकुलेशन आता है, दैट इज अलाउड इन द शेप ऑफ एक्स ग्राटिया पेमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्स में कई बार आते हैं, व्हाट इज एक्स ग्राटिया पेमेंट इन केस ऑफ लीव इन कैश। अब हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं, मोस्ट इंटरेस्टिंग, वेयर एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अमाउंट पेबल इज, हियर द सैलरी का जो डेफिनेशन होता है, पे का जो डेफिनेशन होता है, दिस इज पे प्लस एनपीए, नॉट these things, personal pay, special pay, this is not considered। so this is pay plus npa, and pay plus npa पे जो DA होगा, so ये टोटल पोर्शन कैलकुलेट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ लीव इनकैशमेंट। एंड वंस दिस इज कैलकुलेटेड, दिस पे इज कैलकुलेटेड, लीव सैलरी इनकैशमेंट इज दिस पे, देखिए ये वही पोर्शन है दिस पे, एंड इसको हम कन्वर्ट करते हैं पर डे के रेट में by dividing this is a monthly payment, so we divide this by 30 days, considering average number of days 30 days, whether it is 28 हो, 29 हो, 31 हो, जैसे भी हो, लेकिन 30 days on an average it is considered, and this is converted into per day rate, dividing this by 31 and multiplying this by EL। जितना EL कंसीडर किया गया था प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने दिखाया था, जितना डेज कंसीडर किया गया था उसको कंसीडर करते हुए, अगेन फॉर हाफ पे लीव this salary is divided by 60। here half of per day salary is calculated, that's why this monthly salary is divided by 60 and this is multiplied by half pay leave। सो इस तरह से इन दोनों कंपोनेंट को फाइनली ऐड कर देते हैं और हमारा लीव सैलरी इनकैशमेंट अमाउंट आ जाता है। बट देयर इज अ limitation again the same which I have explained earlier, that EL and half pay leave in no case may be more than 300 days, it may be maximum equal to 300 days। Dearness relief, dearness relief we can call that this is synonyms to dearness allowance in regular service or during the service। ये इन्फ्लेशन को मीट आउट करने के लिए दिया जाता है, ओनली नेम डिफरेंट है, डियरनेस रिलीफ। This dearness relief is provided in all kind of pension, whether this is original pension, whether this is pension increased because of age that I have explained in my previous sessions, whether this is on family pension, so everywhere this is provided। This is rounded up to next rupee, nearest rupee, and if a person is re-employed and the person before re-employed was a class 1 officer, in that case he has a choice कि या तो आप डियरनेस रिलीफ ले लो अपने पेंशन से, या फिर डीए ले लो उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां आपने ज्वाइन किया है, बट बोथ इज नॉट परमिटेड। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन पे फिक्सेशन सेशन। सो आप पे फिक्सेशन सेशन 3 में ये मेंशन है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं ज्यादा डिटेल के लिए। नॉमिनेशन फैमिली पेंशन का जो होता है 3 months बिफोर रिटायरमेंट के दे देना होता है,
and this can be modified by submitting another letter any number of times to the competent person, पे and accounts officer को दें, या अगर बैंक के थ्रू ले रहे हैं, so here bank plays the role of DDO, आप उनको भी दे सकते हैं. फैमिली पेंशन को हम 3 कॉलम्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज प्रीफरेंस, सेकेंड वन इज for how much period this is provided, and third one is what is important remarks in this. So preference is, first preference is given to widow or widower, that is to a spouse. Second one is permanently disabled child. Third one is dependent parent. Fourth one is unmarried children. Fifth one is disabled brother or sister. This disability may be mental or maybe physical. And again, in disability, there is a condition that this disability should essentially be more than 40%. So the certificate from the medical board will mention that the disability is more than 40%. Period. For widow and widower, in all cases, one important point is to be remembered that the moment a person starts earning income equal to the minimum pension, which is 9,000 rupees, his family pension is stopped. Or if in this preference at any stage, the claimant is earning more than 9,000 rupees, he will not get the pension. It will pass downward. So this is very important to understand that period is only till the person earns the minimum pension. That is 9,000 rupees. And इसके बाद दूसरे कंडीशंस हैं. विडो एंड विडोवर के केस में टिल रीमैरेज और डेथ, मतलब फुल लाइफ. लेकिन यदि विडो चाइल्डलेस है और वो मैरिज कर भी लेती है तो उसको पेंशन मिलेगा. चाइल्डलेस है तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, रीमैरिज बेटर टू कॉल इट, परमानेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड टिल होल लाइफ. ये डिसेबिलिटी पीपीओ में लिखा ही रहे या ना लिखी रहे तब भी मिलेगी, या तो पीपीओ में मेंशन है तो इमीडिएटली इट विल स्टार्ट, और ये डिसेबिलिटी का लेटर द मोमेंट द पर्सन विल सबमिट द सर्टिफिकेट एंड लेटर, रिक्वेस्ट लेटर, दिस विल बी स्टार्टेड. डिपेंडेंट पेरेंट टिल फॉर द होल लाइफ, and here the mother is given preference. Unmarried child till the age of 25, but there is a relaxation for widow or divorced daughter, they will get for whole life till remarriage. अगर वो remarriage कर लेती हैं, then this will be stopped. Disabled brother and sister again till whole life. Normal family pension, यहाँ भी calculation part is important. Normal family pension, this normal family pension is 30% of basic pay and NPA. अगर regular family pension को हम consider करें, a retired person which gets, this is 50%, here it is 30%. So that is the difference, and minimum is 9,000 rupees. This increases with age, जो मैंने age benefit already pension के session 1 में बताया हुआ है. So जैसे जैसे एज पेंशनर, फैमिली पेंशनर का बढ़ेगा, 80 के एज पर 20% उनका पेंशन बढ़ जाएगा, इस 30% का 20% बढ़ेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यदि 50,000 था तो 50,000 का 30%, अगर 50,000 लास्ट सैलरी था 30% 15,000, और 15,000 का 20% बढ़ेगा, यानी दैट विल बिकम 15 plus 3 18,000. दिस इज राउंडेड अप टू नेक्स्ट रुपीज. फैमिली पेंशन अगेन, हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन, ये एक नया कंसेप्ट है जो 1119 को आया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. यहां पे कहा गया है कि इफ अ पर्सन डाइज फॉर अ सर्टेन पीरियड, वेदर ही वाज इन सर्विस और ही वाज नॉट इन सर्विस, रिटायरमेंट के बाद डाई होता है या सर्विस के समय डेथ होता है, किसी भी केस में, फॉर अ सर्टेन पीरियड ही विल गेट द फुल, हिज फैमिली विल गेट द फुल पेंशन. वो 30% नहीं होगा, वो रेगुलर पेंशन हो जाएगा 50%. ये इवन एनपीएस के केस में भी एप्लीकेबल है इफ द डेथ इज विद इन 7 years ऑफ सर्विस. यहां द डिफरेंस इज कि ही शुड बी इन सर्विस एट द टाइम ऑफ डेथ, एंड उसका टोटल सर्विस काउंट 7 years होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. अगर इसके अंदर होता है
तो सेम विल बी एप्लीकेबल। यदि ड्यूरिंग द सर्विस डेथ होता है, चाहे वो रेगुलर में है या 7 years के विद इन है एनपीएस में, देन 10 years तक ये इनहेंस्ड पेंशन मिलता रहता है, दैट इज 50%। अगर आफ्टर डेथ है देन दिस बिकम 7 years, ये 10 years का पीरियड यहां रिड्यूस हो गया, दिस बिकम 7 years एंड अगेन दिस इज 50%। इसके ऊपर उसको सारे अलाउंसेस मिलते रहेंगे एंड ऑल दैट। इवन इफ डिसेबिलिटी इज नॉट मेंशन्ड इन पीपीओ, या डिसेबिलिटी डेथ सॉरी डिसेबिलिटी रिटायरमेंट के बाद, पर्सन के रिटायरमेंट के बाद एराइज कर रही है, या कोई क्लेमेंट नहीं है, पेंशन सबका स्टॉप हो गया है, उसके बाद एक पर्सन का एज जो था वो भी 25 से ज्यादा हो गया था, बच्चा था, डिसेबल हो गया, इन ऑल केसेस डिसेबिलिटी, इन ऑल केसेस ऑफ डिसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट दिस विल बी प्रोवाइडेड। यदि फैमिली पेंशन वंस स्टॉप भी हो गया है तब भी डिसेबल हो जाता है चाइल्ड, तो वो दिया जाएगा। डिसेबिलिटी सॉरी दिस इज वन पर्सन एट अ टाइम इज पेबल फैमिली पेंशन, और जो सबसे ज्यादा एज में होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। यदि ब्रदर सिस्टर्स का ग्रुप है तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको मिलेगा। यदि दो विडोज हैं देन इक्वल शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन देम, एंड इफ वन डाइज द शेयर ट्रांसफर्स टू द सेकेंड। सिमिलरली ट्विन केस में इक्वल शेयर, एंड अगेन इफ वन डाइज the benefit transfers to the second one. Minor child. In the case of minor child, this is paid to his guardian till his maturity. But if the child is mentally disabled and minor, then it will be paid for the whole life to the guardian. So through guardian, it will be payable. If a daughter is divorced, or and this divorce has taken place after retirement or death of the person, in both the cases, whenever she will submit the application with relevant proof, she will get it. And she will get it till remarriage or for the whole life. Though important and interesting cases, if there is judicial separation, that is divorce, तो divorce के बाद जो फर्स्ट वाइफ है, अगर उसने रिमैरिज कर लिया and all nomination is changed, then the situation is different. यदि फर्स्ट वाइफ है तो कैसे मिलेगा? अगर डाइवोर्स के पास उस पर्सन का डेथ हो जाता है, then the family pension will be given to the widow in normal case. But if the divorce was on the ground of adultery, that is the extramarital affairs, then this will not be paid to the widow. In that case, this will be paid to the children. Next claimant को मिल जाएगा. This will be paid to the children. But if the widow is guardian of the children, this will be paid to the guardian, that is the widow, जब तक कि बच्चा मेजर नहीं हो जा रहा है। अगर मेजर हो जाता है तो फिर उसको मिलने लगेगा। कहने का मतलब है वो मिल रहा है चाइल्ड को, द विडो इज ओनली बीइंग गार्जियन रिसीविंग दिस। नेक्स्ट, चिल्ड्रन फ्रॉम वाइड और वाइडेबल मैरिज। यदि कोई मैरिज हो जो कि लीगल ना हो, लेकिन अगर उससे भी चिल्ड्रन हुए हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो ही विल गेट द चिल्ड्रन विल गेट, दे विल गेट द पेंशन। यदि वाइफ एंड हस्बैंड दोनों एम्प्लॉयड हो, देन इन द फैमिली टू फैमिली पेंशन में, वो टू फैमिली पेंशन मतलब एक का डेथ हुआ तो दूसरे के पास जाएगा, तो ही विल बी गेटिंग हिज पेंशन एंड अनदर विल गेट हिज रेगुलर, ही विल गेट हिज रेगुलर पेंशन ऑल्सो। इनहेंस्ड रेट में इसकी लिमिट यहाँ पे 1,25,000 हो जाती है। इनहेंस रेट का मैं पहले बता चुका हूं। नॉर्मल रेट में इसकी लिमिट 75,000 रहती है। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी इज मेंशन्ड हियर। Three another interesting cases. यदि a spouse is charged of murder of the pensioner, in that case, on the basis of charge only, not conviction, even on the basis of charge, she or he will be deprived from the family pension. उसको family pension नहीं मिलेगा। लेकिन चार्ज के बेसिस पर कोर्ट में आर्गुमेंट्स होगी, अगर सी इज कन्विक्टेड और ही इज कन्विक्टेड, उसको फैमिली पेंशन नहीं ही मिलेगा, नेक्स्ट को मिलेगा।
अगर वहां वो इविक्ट हो जाते हैं, देन ही और सी विल गेट द पेंशन। अब इस केस में हम कहें बच्चा यदि माइनर है तो अगर यहां बच्चा माइनर भी है, इवन इन दैट केस ही विल नॉट गेट और सी विल नॉट गेट। किसी दूसरे गार्जियन को वो मिलेगा, उसे नहीं मिलेगा। If the staff or pensioner is kidnapped or if he is missing, 6 month तक दिस विल बी गिवन, जो कि आपका ये प्रोविजनल पेंशन कहते हैं। प्रोविजनली फैमिली पेंशन यू कैन कॉल इट, प्रोविजनल फैमिली पेंशन विल बी प्रोवाइडेड हियर एंड आफ्टर 6 month दिस विल बी स्टॉप्ड। FIR वगैरह करना पड़ेगा, उसकी बेसिस में मिलेगा। इफ अ पर्सन हैज डन फ्रॉड एंड हैव डिसअपियर्ड, दिस विल नॉट बी गिवन इन एनी केस। फिर अगर एक पर्सन रिटायरमेंट के बाद फिर से रिमैरिज कर लेता है, रिटायरमेंट के बाद मिसेस का डेथ हुआ, उसने फिर से मैरिज किया, अगर उसने मैरिज किया तो वो बाद के मैरिज में जो उसका स्पाउस हुआ, उस स्पाउस को फैमिली पेंशन मिलेगा। सो दीज आर सम स्पेशल केसेस हियर, and that was all about the pension and other retirement benefit. If you have any doubt, please write to me. My email ID and my WhatsApp number is given on the first very slide. You are requested to watch my earlier videos because many of the references I have taken from there and many similar facts, interesting facts are presented there. Please watch, share and subscribe this channel. Thank you very much for your patient hearing. Thanks once again.